Good morning. Today we will do the third exercise of an insulation, that is length of R and area of sector. Two things we have to do, two formulas. First, what is the length of R? Means if I say this is a circle from here to here, if I say this is the length. If I join this with the center point, this is the sector. That means ये हो गया एरिया, इसको फाइंड आउट करना, सिर्फ ये फाइंड आउट करने में जो हो गया लेंथ। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टू थ्री फॉर्मूला रिमेंबर। The first formula, length of R, L is equal to theta upon 360 into 2 pi R. Second area formula, theta upon 360 into pi R square. And third one is the relation between length, area and radius. That is A is equal to R upon 2 into L. When that angle is not given, that time is the length, that means radius and length will be given, we find the area like this. This is the third form. These two are the most important form. Okay. What is the formula length? Derivation I have to class condition. Remember that when the length means it's all about a part of circle. We know the total is a 2 pi and angle is a 360. So it will be how much angle made with the center, theta upon 360 and 2 pi r means the total circle. Just remember the formula now. Derivation I have to adjust to it. In the video for their class will be there at that. Now the questions are there. Total 30 questions are there. From that, from question number 1 to 13, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, this is all about the area formula. And 3, 7, 8, 9, mostly all about the length formula. So, length formula. Okay, we will do one by one first one. The easy one is remember the formula. Let the question number 1 see. It is given that radius of a circle is 10 centimeter. If I say question number 1, radius equals to 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54. This measure is in the angle, that means it's a theta. Angle is given how much? 54 degree. Find the area of the sector associated with the arc. That means we will find the area. So you know that area of sector is equal to that formula theta upon 360 into pi r square. Simple, just substitute the numbers now. In place of theta, 54 upon 360 into pi is already given in the textbook, 3.14, and r is how much? 10. R square means 10 into 10. Now if I say divide with 6, 9 6 is 54. Again divide with the 3. I am dividing with 2. 1.57. Then you can cancel 1 10. So if you multiply, it will be for the 10 point here, 3 7 21 32, 3 5 52, 17 30, 1 3 1 0 1 4, 47.1 centimeters. You can cancel the 0 from starting, not a problem. Anyhow, we will do the sub. Just to find the area. Nothing we should add in this. This is question number 1. Question number 2. All the sums are mostly easy sums are there. I will give some upper range, you will do. Question number 2 is given. Sorry, question number 2 is in this. Question number 3 will come here. 2 is all about length. Now question number 3. Radius of a sector of a circle is 3.5. That means r equals to 3.5. Length of its arc is 2.2. That means length is given 2.2. Find the area of the sector. That means area will be found. Now see the formula. When r and l is given, we have the three formula. Remember, your theta is not given. That means we go for the third formula. R upon
3.2 into L. But the R is 3.5 upon 2 into L is 2.2. If you cancel it, it will be 1.1. Now if you multiply, it will be 5, 8, 3 and 2 digits. So next question number 3. Question number 4. Little different than question number 4. Radius of a circle is 10 centimeter. Area of the sector is 100. Now area is given how much? 100. Find the area of the corresponding major sector. Okay, major sector. So difference क्या है? Now this area is given area of sector. Area of sector. Sector means if I say two sector, one is this one and another one is this one. If one area is given to us, we have to find this area, the third area. So simple we will do that. We will find the area of circle, putting the area of the circle formula. Then we will subtract here. That means first we will write here area of circle. तो पूछोगे सर यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल का फाइंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. जब तुमको एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कैसे करेंगे? ना एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई इज द 3.14. R square means 10 into 10. That means 314 centimeter square. That means this is the total area. 314 centimeter square. उसमें से हमको दिया हुआ है कि एक एरिया है 100. कितना दिया है? That means area of major sector क्या होता है? Area of major sector is equal to area of circle minus area of minor sector. That means 314 minus 100 is equal to 214 centimeter square. One second. The question is given that radius of a circle is 10 centimeter and area of a sector is given. Again also question is that find the area of the major sector. जबकि एरिया दिया फिर एरिया पूछे, इसका मतलब क्या है? ना एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट दिया दूसरा नहीं दिया. तो हम क्या करेंगे कि पूरा एरिया फाइंड आउट करें. रेडियस दिया है एरिया मिल सकता है, एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से, तो इसको माइनस कर देंगे बस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Extend the easy exercise. Some questions are there. Question number 5 is given. Area of a sector of circle of radius 1.5. That means radius is 1.5 and area is given 30 centimeter square. Find the length of arc of the sector. Length of arc means L question mark. अब बताओ R A L है ना, ये वाला फॉर्मूला फिर. That means we'll write here area is equal to R upon 2 into L. Area is given how much? 30. R is given how much? 1.5. L is the question. In the place, that means 30 into 2 upon 1.5. So that we openly has to divide. Now if I think about, we move the point first, so I can write here 30 into 20 upon 15. So that 20 कैसे हो? I remove the point from denominator, put a 0 on the numerator. 15 to the 30, 220 is the 40. That means my length is the 40 centimeter. One second, let's see here. Radius how much given? 1.5. Area how much given? 30. Find क्या करना है? Length. What is the formula? Area equals to R upon 2 into L. Area is placed 30. R upon 2 means 15. That means 1.5 upon 2. L is the question mark. And change the place to multiply 1 divide. To remove the point at 0 below. 15 to the 30, 220 to the 40. That means length of that arc is
40 centimeter. So it is not 1.5. Okay, we are 15 centimeter. So now we need to the point. So 15 to the 4 centimeter. Length will be 4 centimeter. Sorry, the question it is written 15. 15 centimeter. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 15 centimeter. पॉइंट दिख रहा है 15 centimeter. Then question number 6. क्लियर हो गया? ये रेडियस 15 दिया है, 1.5 नहीं है, 15. Is given like the question number 3rd. I will read. In figure 1.1, radius of circle is 7. R equals to 7 cm. And measurement of arc is given 60 degree, not 60, right? The figure 68, that will be 60. That means measurement of arc MBN is equals to 60 degree. Find area of circle. एडिट में क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल. सेकेंड एरिया ऑफ एम्बियन. थर्ड इज एरिया ऑफ ONCN. फिगर भी बना लेता हूँ. क्वेश्चन में क्या किया? इस सर्कल का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर. एक आर्क का एंगल दे दिया है 60 डिग्री. तो पहले हमको पूछा एरिया ऑफ सर्कल. सिंपल एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला में लिखेंगे. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज द 22/7. आर स्क्वायर मींस 7 into 7. आर का नाम 7 दिया है 22/7. 7 to 14 करेंगे. 7 to 14 150. तो पहला स्टेप में आ गया एरिया ऑफ सर्कल. सेकंड एरिया ऑफ OMBN, that means this sector only. So this is the area formula. Area of sector OMBN is equals to theta upon 360 into pi r square. And theta how much here? 60 upon 360 into, in place of pi r square I can write directly 154. Because in the first we will get the pi r square 154. Now if I cancel, we will cancel 6 1 is 6, 6 is 36. That means we have to divide the 154 and 6. So we divide first with the 2. 2 7 14, 2 7 14. Now we can take the point. So if you divide the point, 3 2 is 6, then 17, 3 5 is 14, remaining 20. That means it will be 6 7. Approximate, right? It will come 25.666. We will take the approximate 25.67. Now, if I got this area is the 25.67, then the OMCM is the remaining area. Remaining for that what we do? I will subtract from the circle area, total area. And which will write here area of OMCM is equals to area of circle minus area of OMBN. Area of circle is the 154 minus 25.67. As we subtract, it will be 3, and will be 30 minus 5 is the 8, 4 minus 2 will be 2. One second also. Question is given that in the given figure radius is the 7, one angle is given 60 degree. You have to find the area of circle, area of the minor sector, area of the minor sector. Area of circle, area
area of minor sector, then you subtract, you get the area of major sector. That is it. After this question number 6, we'll go for question number 10. Question number 10. Then is given that 3 questions are there. I will do one question, you do other question. I will do the last question. Radius of a sector of circle is 7. That means r equals to 7 cm. Find the measure of arc of the sector if it's. That means find the measure of arc. अभी एंगल दे दिया, इसका मतलब हमको find the measure of arc, हमको एरिया फाइंड आउट करना और एंगल का थर्ड बिट करना, थर्ड बिट. क्वेश्चन नंबर 10, third bit. So 3 right angle means I can write here 270 degree. Now you got the doubt that. So how do we do 70? But it's given 3 right angle. 3 right angle is 90 degree. So 3 into 90 degree, 270. Now find the area. Put the area formula. Area is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta is equal to 70 upon 360 into pi is equal to 7. Transforming 7 into 7. 1 7 1 7 will cancel. 0 will cancel. Then 9 3 is 27. 9 4 is 36. I divide by 9. Then if I divide 2 2 is 4, 2 11. Now do not cancel. That means 7 3 21 into 11. So divide 11 into 31 upon 2. Now if you divide 2 1 जा 2 5 जा 5 centimeter square. 115.5 centimeter square. 1 centimeter. The radius is given how much? 7. Angle 3 right angle means 270. Like that we will do other first and second bit. Theta upon 360 pi r square. Like this. Question number 11. Is given the area of minor sector of a circle is 3.85. That means area of sector is given. centimeter square, and the measure of its central angle is 36. That means theta is over 36 degree. Find the radius of the circle. That means r find out. कोई formula area पे है. Find क्या करना है? r. तो simple लिखेंगे. Area of the sector formula theta upon 360 into pi r square. Area how much given? 3.85. Theta how much given? 36 upon 360. Now pi is given in textbook. Not given. So then take 20 upon 7. Let's see. R square is like that. We need to find the R. Why they put 2 upon 7? Because the 3.85 comes in 7 table. The given data, if it comes in 7 table, then we will go for the 2. Okay, we'll divide here. Now I'll take all the term to the right side. If the R left side, if the R square right side, so it will be 3.85 into 10 into 7 upon 22. If I multiply, it will be 38.5. Because for the 10 it will be conversely to right side upon 22. If I divide it 11 2 is 22, 11 3 is 33, remaining 5 55, 11 5 55. If I divide 2 and 7 it will be 3.5. See here, r square में 3.5 2 टाइम आ रहा है. That means r कितना हो जाएगा? बस कुछ नहीं दिया. सवाल बात समझते? एरिया दिया हुआ है, एंगल दिया है, r को फाइंड आउट करना है. बस एरिया फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, r को फाइंड आउट करना है. Now next two questions are the difficult and the important questions for the exam, and that also will come for the 4 marks, 3 marks like this question. Because it is bigger. Difficult is not there, but it is bigger.
that in figure 3 point in figure 7.35 PQ bar is the rectangle, PQ is 14, PQ कितना दिया है, QR is equal to 21, QR कितना दिया है 21. Find the area of the x y z, x y z इन तीनों का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. ओके, आई विल ड्रॉ द फिगर हियर. Do one thing, you can naming over your two naming A and B. Just give the name. This is my x, y, z. This is given 14. This is given 20. Orally, if I do, orally, if it is 14, the radius of this must be 14. That means remaining must be 7. क्योंकि पूरा 21 था ना, बस ये जो इम्पोर्टेंट पहला पार्ट, तो पहले इसको हम करेंगे. इस गिवन दैट PQ is equals to 14 centimeter and QR is equals to 21 centimeter. I can say that QA is equals to PQ is equals to 14 centimeter, radius of same circle, radius of same circle. क्योंकि ये एक ही सर्कल पे है वो रेडियस, ये अगर सर्कल को कंप्लीट करूँगा तो इसी सर्कल का ही ये रेडियस है दोनों, तो ये 40 है, ये 40. Then remaining AR will be AR is equals to QR minus QA, that is 21 minus 14 equals to 7 centimeter. Then I will write keep that AR equals to 7 centimeter. Now I will go for one. For sector X, कौन सेक्टर के लिए? X सेक्टर के लिए. और the area formula, area is equals to theta upon 360 into pi r square. In place of theta, I will write 90 upon 360 into pi is equal to 2 upon 7. R square means 14 into 14. Now you get a doubt, so in 90 just डाल दिया. As it's a rectangle, so you can say that all angle will be 90 degrees. As it's a rectangle. That's why you can write also here by side theta equals to 90 because angles of rectangle are 90 degrees. अगर doubt होगा तो side वाले छोड़िए. Then if I solve this, area is equals to 0 0 will cancel. If I cancel 9, 9 4 जा 36, 7 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, if I cancel 2 2 11. Cancellation is 0 11 into 14, that means area will be 154 centimeters square. And this is the area of X. इसका area X करना. Like this for Y. For sector Y, for sector Y, ये स्टेटमेंट को थोड़ा लिख लेना. For sector Y, we can say that area is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta is again 90 upon 360, but एक बार Y का रेडियस क्या है 7. So you can say 22 upon 7 into 7 into 7. If I divide 2 2 2 11, so अभी 2 से divide होगा, that means 11 7 का 77 upon 2, that is 3 and 8.5 with the area of Y. 38.5. Now we go for the final. That is for Z. अभी Z के लिए हमको दो स्टेप करना है. Z के लिए दो स्टेप कौन सा स्टेप है? द फर्स्ट हम पूरा रेक्टेंगल का फाइंड आउट करेंगे. याद रखना
ये कोई सेक्टर नहीं जो फॉर्मूला कर सकते, तो क्या करेंगे, पहले पूरा रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से इसको और इसको दोनों को माइनस करेंगे तो बच गया ना तो z वहाँ पे। दैट मींस वी राइट हियर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम राइट रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस 21 इनटू 14, 41 14 carry 1 14 2 28 plus 1 का 29। अरे 41 या 14 carry 1 14 2 28 plus 1 का 29 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, पूरा एरिया। नाउ एरिया ऑफ Z इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS माइनस एरिया ऑफ X माइनस एरिया ऑफ Y। दैट मींस 294 माइनस 154 minus 38.5. So 294 minus 54, पहले इसको माइनस करते 440 9 minus 4 9 minus 5 4 2 minus 41. Now if I divide subtract it will be 5 9 minus 81 3 minus 2 0 1 0 2. This is the area of J. That means steps इसमें क्या करने वाले हैं, पहले तो ये वाला स्टेप में याद रखना होगा, यहाँ तक ये क्या है ना, गिवन डेटा को वापस अरेंज कर लेते हैं, हमको रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। देन सेकंड स्टेप एरिया ऑफ, देन दिस एरिया, थर्ड स्टेप, इन 4 स्टेप्स सिंपल स्मॉल एंड फिफ्टी। पहले इसको फाइंड आउट करना है, फिर दोनों एरिया फाइंड आउट करना, फिर पूरा एरिया फाइंड आउट करके उसको माइनस करना। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 also. Is given triangle L11 is equilateral triangle, which triangle is equilateral triangle? That is L11 is equilateral triangle. L11 is equal to 14, that means one side is given 14. In the figure, 3 sectors drawn with a vertex center radius 7. Okay, if radius cut it is 7, that means this is the area 7. So 7 7. Then एरिया आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है, कोई एक सेक्टर का फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट मींस तीनों सेक्टर का फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, सेकंड एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, थर्ड area of 3 sector, and fourth area of shaded region. Okay, लेकिन it is just इतना फिगर ड्रा कर लेता हूँ, समझना और इजी है। Side is 14 and radius is given as 7. So first we will find, okay, given it all right, LM is equals to 14 centimeter and R equals to 7 centimeter. Triangle LMN is an equilateral triangle. Okay. Area of the triangle. First, area of triangle LMN is equals to the formula root 3 upon 4 into side square. It's the area of equilateral triangle formula. That means root 3 upon 4 into side is the 14 into 14. 2 7 again 2 7. Root 3 also given in the textbook. 1 point is not given. Okay, keep like this then. 7 7 49 root 3. Otherwise you can put 9 root 3 to 1.73.
Then second bit, area of one sector. Area of one sector, for that area of one sector is equal to theta upon 360 into pi square. Theta is now 60. Again you write the same thing. All angle of equilateral triangle is 60 degree. Into pi is S side 7 upon 2 upon 7. R square means 7 into 7. ये side था और ये radius है. Then ये जो cancel 6 1 जा 6 6 जा 7 7 cancel. 2 3 जा 2 11. That means 2 11 7 जा 77.3. And that is, if you divide 3 2 जा 6. 17 3 5 ja 15 6 7. It is the same thing, that will be absolute value. Area of one sector 25.67. 25.67. Then question is given, find the area of three sector. तीनों sector का find out करना है. Area of three sector is equals to 3 into area of one sector. area of one sector में ये वाला पार्ट लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे. 77.3. अभी क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन क्या करना होगा, पूरा ट्रायंगल से तीनों पार्ट को माइनस करेंगे. तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड पार्ट मिल जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 11 minus area of three sector. That means area of triangle कितना था 49 root 3 minus 77. root 3 सबट्रूट करते हैं अंदर तो माइनस नहीं करते. 49 into root 3 is 1.73. 1.73. So multiply. चलो multiply कर लेते हैं. 1927 carry 2 9763 plus 265 carry 6 9196 50 947 963 65 carry 6 50 43 12 carry 1 14 21 29 carry 2 426 7 7 up to 2 digit 84.77 minus 7.7. That means if you subtract, ये इससे subtract होगा, इससे नहीं तो पॉइंट का नंबर उस में रहता है. 14 minus 7 into 7 7.7. थोड़ा बहुत पीछे आंसर अगर दिया होगा मीन्स तब चेंज द पॉइंट होगा. जैसे आप लोग ये देखो पीछे आंसर में क्या है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे. Like this. That means इसमें क्या क्या किया हमने, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किए, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड. 4 question and 4 step. Area part is finished. Now remaining 4 question are all about the length. See that question number 2, 7 and 9. Question number 2 is given. Measure of an arc of a circle is 80 cm. Measure of arc का मतलब जो angle centimeter ने degree डालना. That means theta is given 80 degree. If its radius is 18, r equals to 18 centimeter. Find the length of the arc. I find out करना. क्या करना? measure होता है angle में, degree होता है ऊपर तो centimeter लिखा हुआ है. L find out करना. Find जाएगा 3.1. तो एक का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. 80 upon 360 2 pi is 3.14 and the 80. कैंसिलेशन हम कर लेंगे. 81 जा 18 2 जा 2 कैंसिल. अब 8 से 8 4 32 कैरी 3 8 1 8 11 कैरी 1 8
Length meter should be in centimeter. अरे वाह 8 4 32 में 3 8 में 3 11 के 1 8 24 1 25. This means चलिए 7 8 9 7 that is important. Seventh one is given in the figure 7.32. Radius of circle 3.4. R equals to 3.4 centimeter. Perimeter of the sector. The perimeter of the sector ABC is how much? 12.8. Find the area of it. क्या find out करना है? Area find out करना है. Okay, तो फिगर ध्यान से देखना. In this circle, okay, the figure is the center and C is just 3.4 is there. क्वेश्चन दिया है रेडियस 3.4 है. पेरीमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड. दैट मींस इस क्वेश्चन में हमको इसका सबको मिला के दे दिया वो 12.8. ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसका को सॉल्व करना है. पेरीमीटर ऑफ ABC मींस आई कैन से दैट इट इज PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ ABC. इसका लेंथ ABC का लेंथ. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड. ये उसका पूरा पेरीमीटर है. ये दोनों सिंपल डायरेक्ट नंबर है. बड़ी लेंथ हमको मिलती है. So in this case, I will write 12.8 in place of PA. I will write 3.4. PC also 3.4 because both are the radius. This length will be possible. Length of R ABC. Length ABC R ABC. R ABC. So if you add this, it will be 6.8 plus length RABC with 12.8. If you subtract, it will be 6.0. That means one can say 6 also. 6.0 or you can write 6. अब ये अगर लेंथ मिल गया और रेडियस दिया हुआ है तो go for the last formula, area formula. What is that? Area is equal to R upon 2 into L. R is given how much? 3.4. L is how much? 6. So 3 4 12 करेगा 3 3 9 ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था. पेरीमीटर से फाइंड आउट करना था लेंथ. एक बार लेंथ फाइंड आउट कर लिए तो फिर लेंथ और एरिया और रेडियस वाला फॉर्म करना है. फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 8. बड़ा एक्सरसाइज है ना. ज्यादा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन in the figure 7.33. sector of both angle is 160 degree. angle कितना दिया हुआ है? 60 degree. OM is equals to 21 बराबर 21 है and OR equals to 7. ये कितना 7 है. find the length of दोनों का length फाइंड आउट करना है. सिंपल हो गया. मैं फिगर बना लेता हूँ. फिगर इस साइड बनाता हूँ. एक और साइड O R M Q N X and Y. This is 7 and the upper one is 21. Angle is equal to 60 degree. तो उनका लेंथ फाइंड आउट करना है. चलो राइट. इन दोनों का लेंथ फाइंड आउट करना है. इसका और इसका. पहले दूंगा फॉर सेक्टर R x क्यूब. कौन सा ले रहा हूँ? R x क्यूब आ गया. R x क्यूब उस टाइम में एंगल क्या होगा? 60. दोनों का एंगल सेम है बट रेडियस क्या होगा? 7. You write length of R x cube is equal to theta upon 360 into
2 pi r. Theta is 60 upon 360. 2 into 22 upon 7 r is the 7. So 7 cancel. That means 22 upon 3. Divide 2. 3 7 is 21 upon 3. Second, for r m y n, theta equals to 60 degree and r equals to 21. r कितना है इसका 21. इसलिए length of r m y n is equals to theta upon 360 into 2 pi r. 60 upon 360, 2 into 22 upon 7, r is 21. 3 2 जा 1 तो ये भी 22 हो गया. फिर नंबर 8. कोई डिफिकल्ट नहीं सर, मेरे थोड़ा डिफिकल्ट लगे. क्वेश्चन नंबर 9. मैं रिपीट भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजी सम है. इन द फिगर 7.34, if area of the ABC, ये एरिया PABC is given 154. ये एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस टू सर्कल 14. रेडियस कितना दिया है 14. फाइंड द एंगल. पहले इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे दिया फॉर्मूला से. देन लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे लेंथ. तो गिवन डिटेल देते एरिया ऑफ सेक्टर ABC is equals to 154 centimeter square. R equals to 14 centimeter. area फॉर्मूला करेंगे तब दिया है area equals to theta upon 360 into pi r square. area मिला के कितना है 154. थीटा हमको नहीं मालूम 360. pi is 22 upon 7. r square means 14 into 14. अभी डिवाइड एक आप सबको इधर लेकर आके फिर डिवाइड करें. थीटा में क्या है तो ये दोनों डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई हुआ है. अभी कट करते हैं. 7 1 जा 7 2 2 1 जा 2 1 11 11 2 जा 22 11 1 जा 11 4 जा 14 cancel. We cancel 2 and 1 into 90. That means nothing is कैंसिलेशन थोड़ा तुम्हारा काम है तो कैसे करेंगे. देन सेकंड टर्म है लेंथ. जो हमको एरिया और रेडियस दिया तो लेंथ का फॉर्मूला सिंपल है. एरिया इक्वल्स टू r अपॉन 2 into l. एरिया इज गिवन हाउ मच 154. r is given how much 14 upon 2 into l. तो क्वेश्चन में कैंसिल दिस 7 में डिवाइड कर लो. 7 to the 14 7 to the length equals how much 22 centimeter. So we complete one exercise, that is the third exercise. We go for the fourth exercise the next one. Third exercise is a little lengthy, but nothing is difficult in that. And these three formulas you have to remember. And also I did the division of the questions. Questions are in this type of, these two type of questions are there. Just go for it. Okay.